अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? बस ठीक ठाक मेरी जानी, मैं बस गाड़ी में आगे बैठ गया हूँ। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस ऑन। मैं काफ़ी लोगों को ना किया है इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने खुद आपको अप्रोच किया। आई थिंक यू द बेस्ट वन टू सिट ऑन द लाइव एंड टेक a very mutual step towards the reality। जो हम बात आज करेंगे, देखें तो पैदा होगी है, but Rocky is the host, we are here for a discussion, I'm not here to answer anyone's questions, I'm not here to make any kind of stupid judgments on what happened that night. I'm here to clear my name in front of my brother here, so that's who it's going to be. So if you've got an opinion that had to do security, by all means keep it to yourself, and then Rocky and I will decide who to bring onto the call and we take it on from there. मुझे मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है और मैं उर्दू से थोड़ा सा दूर भागना चाह रहा हूँ, इसे जो इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो बेहतर रॉकी भाई भी ट्रांसलेट कर लेंगे हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए। So रॉकी भाई, down to you now। अच्छा आसिफ भाई, अभी तक इनका ये कहना है, जो लोग इंग्लिश नहीं समझते, आपको छोटा सा एक मुख्तसर सा बता देता हूँ कि उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे काफी लोगों ने इनको अप्रोच किया है, उन्होंने ना बोला है इस इंटरव्यू के लिए, मगर उन्होंने मुझे इसलिए अप्रोच किया है कि एक न्यूट्रल होस्ट बन के होस्ट करूंगा और दोनों साइडों की बात पूछूंगा। सबसे पहले आसिफ भाई, आप प्लीज इतना बताएं कि आप पे फिलहाल एलिगेशन है क्या और लगाई किसने है? आई थिंक सॉरी आप ये बताइए कि आप पे इस टाइम पे एलिगेशन क्या और लगाई किसने है, प्लीज। सर जी, एलिगेशन तो किसी ने भी नहीं कुछ लगाया, there's no allegation। हाँ, जिस तरह अभी मेरे सामने कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ मीडिया पर्संस की, कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड साफियों की, ठीक है, सेल्फ मेड तो नहीं कहा जा सकता, सेल्फ स्पॉन्सर्ड ही कहा जा सकता है, जिन्होंने खुद पैसे पूसे लगा के बने हुए, वो कुछ बातें कर रहे हैं आपके बारे में जो कि ऑब्वियसली एज आई नो यू पर्सनली, मुझे पता आप रियल लाइफ में वैसे इंसान नहीं है जैसे आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पहली चीज आ रही है कि आप उसको टच कर रहे थे, आपने उसको बग्गी पे टच किया, वो कहते हैं वो अननेसेसरी टच था। उसके बाद जब क्राउड नहीं था आपने फिर भी उसे टच किया, और फिर क्राउड में आपने उसको बहुत स्ट्रांगली टच किया। ये बेसिकली मेरे तक आपसे इंटरव्यू से पहले कुछ लोगों ने बातें पहुंचाई हैं, पीपल यू मे नो एज वेल, माइंड योर म्यूचुअल्स। सो उनमें से कुछ आप पे तनकीद करने वाले भी हैं, उन्होंने भी बेसिकली ढकी छुपी बातें पहुंचाई हैं। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब से आपने पूछना है कि आपको क्या जरूरत थी, पहली चीज कि आप उसका बगी पे हाथ पकड़ते जब वो बगी राइड के ऊपर खड़ी थी। Yes, बिल्कुल, that was down to health and safety। जब वो खड़ी हुई हैं तो उन्हें एकदम से, जब घोड़ा एकदम से आगे हुआ है, she fell down and it was my duty to hold her and make him to a safe place। और ये with consent मैंने पूछा था, जो मायरा खान, I'm not going to touch you, and she consented by that, and then I held her hand and away she went, let her be sitting down or standing up। So that was very consensual kind of a touch, and we didn't have no security issue there except for health and safety one। So that's what I want to say to that from that side। लेकिन रॉकी भाई, उससे पहले ना मैं थोड़ा सा अपने आप को खुद एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, what my resume, my CV is। Yeah, guys, maybe you lot don't care because I think you lot think you're the masters at this game of security, but let me just tell you, I've been in this game for 30 years. In that 30 years, I've come across so many incidents, so many scenarios that you would not even be able to begin to think or imagine। I worked 15 years at Canary Wharf in-house security. We've done hostile reconnaissance, we've done anti-terrorism, we've done close surveillance, something that you lot can't even dream of. I guarantee you that what I've been through. For personal security-wise, I've done mainstream Bollywood actors from Shah Rukh Khan to Salman Khan to Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, and one of my biggest celebrities of all time, nothing to do with the film industry, the great Imran Khan, cricketer and politician as well। Yeah, आप YouTube पे भी ढूंढ लेंगे, and you can see right from my resume। So I'm not a stupid security guard that you think is walking down the Ilford Lane with 250,000 followers of TikTok behind me। I'm a very professional, very, very experienced and very educated in this field। And जिसकी भी मजाल है आके मेरे से कोई भी सवाल कर ले, जो आप कह रहे हैं रिंग बना दो, बैरियर डाल दो, एग्जिट ये कर लो, आ जाओ। Let's talk about how to do that। Let's talk about how to do security। You will not will be able to change my you will not be able to change my mind on that one। लेकिन रॉकी भाई, that's the reason why I held Mara Khan's hand, which had a glove on as well, plus he consented and it's health and safety। So we go on to the next one। एक और आपसे क्वेश्चन है, पहले इनको व्यूवर्स को बता दूं जो नीचे उतावले हो रहे हैं। गाइस, आपको मैं चुन के जो अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल से आएगा क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा, मगर वो डिबेट करने का नहीं सिस्टम होगा क्योंकि काफी व्यूवर्स होते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, अपना सवाल रखेंगे और आप नीचे उतर जाएंगे और आसिफ भाई फिर आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। अगर किसी ने इस तरीके से कॉल पे आना है आप आ सकते हैं, मगर वो नहीं होगा कि इधर कन्वर्सेशन चल रही होगी क्योंकि वो घंटा घंटा चलती है फिर, ठीक है।
आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप जाएंगे, ये जवाब देंगे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है वो बाद में बात कर लेंगे। और एक और है कि हुमायूं सईद ने आपको पुश किया था लिटरली, जबकि वो पुश नहीं लग रहा मुझे, वो देखने में ऐसा लग रहा है एज फार एज आई कैन सी कि वहां पे रश बहुत ज्यादा है एंड शी वाज रियली पैनिक दैट शी कुड गेट अटैक्ड और समथिंग। और ऑब्वियसली एक जो वर्कमेट होता है, इतना अर्सा काम किया, शी वाज क्वाइट क्लोज टू हिम, सो उधर एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, शी प्रोबब्ली फील मोर सेफ विद हिम। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको धक्का क्यों दिया था हुमायूं सईद? हाँ जी, no, let's go back to that video, okay? Yeah. There was a security officer in front of Myra Khan. Behind Myra Khan was me. Behind me was Humayun Saeed, and there was a security guard behind him. जब धक्का दुकी हुई है, जब मैंने उसको Myra Khan को पकड़ा हुआ है, and the way the melee happened, he got me onto the shoulder. He went, I said, "भाई, अब आप छोड़ दें, leave her." He got hold of her and he said to her, "That is it. We're going home now." बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। Myra Khan कहती जो no, चलो। Humayun Saeed कहता है, "Are you sure? जाना है तो जाओ." So he wanted to, that's it, end of the function, no meet and greet, do a U-turn, let's go. That was the conversation taking place. Lip read it, guys, lip read it, do it slowly. बस बहुत हो गया, चलो अब यहाँ पे। क्योंकि आपके ऊपर कहा जा रहा है कि you tried talking to Humayun and he completely ignored you after that push. Yeah, because all of us was in a zone. We were all in a zone. My zone was to protect my asset. My asset is Myra Khan. He's now into a zone that he needs to protect his co-host. No one's going to listen to no one like this. So I'm trying to get, but ultimately they're both the assets. They're both the clients. They're both the celebrities. So I have to look at Humayun Saeed Saab and Myra Khan to say what they want to do. Ultimately, it's their decision if they want to walk into that door or do a U-turn, get back and get the hell out of there. And true to their word, they kept on walking. That's perfectly fine. आसिफ भाई, एक और क्वेश्चन है जो काफी खवातीन का इस टाइम पे क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे इनबॉक्स में क्वाइट फ्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं। खवातीन के, औरतों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या यूके का लॉ किसी मेल सिक्योरिटी गार्ड को या मेल बॉडी गार्ड को अलाउ करता है कि एक फीमेल को इस तरीके से पकड़ना, इवन सिक्योरिटी के लिए? This what I'm not going to sit here and educate anyone how to hold anyone. There's a way of holding someone. It's become here. When you grab someone from the sides towards the front, these arms become the human cordon arms. That means if someone comes forward, you can release yourself and you make them go back. It becomes a cage. जो आप लोग कह रहे हैं ना, you should have barriers there. This is the arm that comes around. I'm protecting my asset. This is it. This is my client. No one's going to get between me and her except for my arms. Come next to her, you're going to go flying back. There it was. लेकिन जो धक्का दुकी हुई है ना, let's look at it from that side. The management team made the human cordon in front of the door. There was about 6, 7, 8 people, जो मैं नाम नहीं लूंगा, that were trying to rush the door. What एकदम से when they were ricocheting off each other, hit my security guard, hit Myra Khan. I held on to her. I had to grab her because it's Sari Thursday from 360 degrees, 360. The people just piled it. I now. So how many security guards were there, Asif bhai? 4. 4 guards. और कितनी वहाँ पे भीड़ कितनी इकट्ठी होगी? मैं कहा तो 2 से 3 हजार। सो ये फिर मैनेजमेंट को इतना तो सोचना चाहिए था कि 2 से 3 हजार की भीड़ इस तरह ओपन एयर में 4 सिक्योरिटी गार्ड फॉर अ सेलिब्रिटी। लोग रोकी भाई, मैं यहाँ पे सवाल देने के लिए नहीं आया जो मैनेजमेंट ने क्या की है। सवाल ये मैं कर रहा हूँ जो मैंने एक सबसे बड़ी सुपरस्टार पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हाथ इनअप्रोप्रिएट लगाया या नहीं लगाया। That was it. मैं आपको ये भी कह दूं, 3 से 4 हजार बंदे भी हो ना, बाय लॉ यू supposed to have 1 for 100, लेकिन जब आउटडोर इवेंट होता है तो there's no capacity. ये जाके मैनेजमेंट टीम पे होता है, उनके what's the budget on security, what's the budget, तो ये बजट डिस्कस नहीं हुआ था। My job is now to protect the asset at all costs. This is the terminology for this. This is not to say या मैं वहाँ पे 20 बंदे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर दो, 4000 बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते to get to Myra Khan that time. Yeah, my job is to get her into that door, from the buggy into that door, safely, respectably, how much you can say, and in a very dignified manner. But were they trying to attack Myra Khan, or they were just trying to approach her? What were they trying to do? Yeah, the dynamic risk assessment was that people was trying to get into the door, right? Trying to get into the door and upstairs. So there was a human cordon made by the management team that no one's going to go in there except for the 10-15 people that was from the management team. So that ricocheted off, and there was a melee that took place. That melee surrounded the 360 of the whole of our line from there. So I could have put 20 people there with 20 barriers. People, if they wanted to get to the door, they would have got to the door.
and then the fight would have occurred. We are not here to get physical into fights with anything. If it comes down to it, then we can deal with it. But our main priority is always is the asset of who we're going to protect. So I've done that in a very dignified way, and I've got a lovely blue tick. My company got a lovely blue tick from the clients, from the management team, that I am 100% convinced in the conversation that I've had with the assets that they are very satisfied with it. Because you saw what happened at Maracan and Amayusi, by within seconds went upstairs, went straight to the balcony, blowing kisses to their fans, giving heart signs and everything like this. And then we came in, we had dinner, and then half an hour later we went up and then we left from it. Yes, asset guys, this is what I mean about you. You lot have got no... Listen, Rocky Bhai, I don't know. Some people drive Ubers, some people work in KFCs like this. If I don't like the way they make a KFC, I ain't going to tell them this is the way to make it. Only the person behind the counter into the kitchen knows how to make a KFC chicken. Brother, I eat KFC all day long, but doesn't mean I know how to make it. Don't tell me how to do my job. You lot are not qualified. You lot are not educated on that route. You think security is just to wake up and you're breathing, you stand on a door. You got the wrong perspective, brothers. You're speaking to a very highly qualified person. And I'm not saying I'm SAS. I'm not saying I'm an ex-commando. I'm not to a battalion of army regiments. I'm not a commando or anything like that. But what I have is great skills, knowledge, and experience and education in security. Brother, don't test me on that level. You will never win. I promise you that. Asif bhai, there are a few journalists in London. Yeah, I don't take them as journalists, to be very honest with you. I've seen a video earlier. There's a lady with headscarf on. I don't want to mention the name. She's been too harsh on you. You probably have seen the video. The video probably did have across to you. By watching that video, मैं उर्दू में ही बात रखूंगा. उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सनल ग्रिंज है आपके साथ. हाँ जी, मैं उस औरत को एक सेकंड के लिए भी पब्लिसिटी नहीं दूंगा. जो इतनी डेस्परेट औरत है for publicity, we are going to move on to another subject. I am not going to waste a breath on that species. But you're right, it is a personal grudge. So means people are roasting in the personal grudges then, yeah? हाँ जी, बिल्कुल. रॉकी भाई, आगा भाई का भी एक नाम था 3 साल पहले, right? जब हम भी मिले. She was part of that little clique, right? And but I'm not going to say her name, and I don't want anyone to even guess her name. But that's a very personal matter that she's done it for me. But did she say, मुझे आने दो अंदर, आसिफ भाई, मैं मुझे देखे मैं ये हूँ, मैं shut up, woman. रॉकी भाई, it's simple as this. आपने कोई दावत रखी है, आपने मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया है, आपने मुझे एक लिस्ट दी है जो ये बंदे बस आ सकते हैं. आपने मुझे ये लिस्ट नहीं दी जो ये बंदे नहीं आ सकते. आपने मुझे लिस्ट दी ये बंदे आएंगे अंदर. So you're a nightclub policy. Your name's not on the list. You're not coming in. So basically, you didn't let the lady in, yeah. So she had that problem with you afterwards. Of course, my brother. Rocky भाई, मैं आपका बड़ा भाई है, मेरे छोटे भाई हैं. मैं आपको भी ना अंदर आने देता, आपको भी ना आने देता. मैं कहता सर जी, माजरत के साथ यहाँ पे आप अंदर नहीं आते. And you like a brother would understand that. आप मुझे रोस्टिंग करने पे आ जाएंगे, आप मेरी खालो देने लग जाएंगे. मैं तो कभी बात ही ना करूँ आपसे. Understand that we're in a professional capacity here. We're in a zone like this. If ना होता ना, if you're that important, you woman, if you're that important, then get on that guest list. Get on that list. सबके सब बना के रखो, फिर आपको इनवाइट आएगा. Yeah, ठीक है. और गेस्ट मैं slowly one by one लूंगा लोगों को, ठीक है. एंड लोग वही आएंगे गेस्ट पे जो अपनी ओरिजिनल आईडी से होंगे, जिनका देखूंगा आईडी को टच करते हैं तो पता चलता है ओरिजिनल आईडी से हो. आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपना सवाल रखेंगे, आप चले जाएंगे. और दूसरी बात, कोई ऐसा सवाल आप नहीं रख सकते जो अखलाकियात के दायरे से नीचे होगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा. हम आपको कॉल से नीचे उतार देंगे और अगला कॉलर ले लेंगे. चलो, I'm gonna take callers one by one.